channel. So today's video is going to be a very chilled out vlog. मेरे exams finally over हो चुके हैं and in 2 days we are leaving for Andaman. So this video is going to be all about preparing for the trip. But I decided to start the vlog today क्योंकि अभी हम लोग 98,000 पे हैं. So I'm guessing कि आज रात तक या कल तक हम लोग 100k hit कर लेंगे. So I really wanted to capture this in the vlog. Right now we are at 98,000. तो आज हम लोगों ने सोचा है कि हम फोटोशूट भी कर लेंगे 100k के लिए क्योंकि आने वाले 2 दिन में हम बहुत बिजी होने वाले हैं. एंड आई रियली वांट टू अपलोड अ पिक्चर जैसे ही 100k हिट हो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी. सो आज का सीन ऐसा है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मा भी रेडी हो रही है. देन वी गोना गो टू हर सैलून. थिंकिंग ऑफ गेटिंग माई हेयर कर्ल्ड क्योंकि मैं आपकी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और आप बोलते हो कि चेंज योर हेयर स्टाइल. तो मैंने सोचा आज थोड़ा कर्ल करवा लेते हैं, डिफरेंट लुक हो जाएगा फोटोशूट के लिए. एंड देन वी गोना गो टू अ बलून स्टोर. मैंने फोटोशूट का आइडिया सोचा है कि एक कलरफुल बलून के बंच के साथ पिक्स क्लिक करूंगी. लेट्स सी फोटोशूट कैसा टर्न आउट होता है. आई एम गोना शो यू गाइज ऑल द BTS. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डे. सम पिक्चर्स और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी वीडियो क्लिप भी बना लें. और ये बलून्स काफ़ी क्यूट लग रहे हैं. सो या और आज ज़्यादा धूप भी नहीं है तो अभी तुरंत में सनसेट भी हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी से फोटो. Guys, so it is the next day. Yesterday I did not vlog क्योंकि कल तक हमारे 99k ही हुए थे. अभी 99.5k हैं. सो होपफुली आज रात तक 100k हो जाए. मेरे को बहुत ज़्यादा वो केक खाने का मन कर रहा है, फ्रिज में रखा हुआ है, बट आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ. तो आज का मेरा सीन ऐसा है कि सबसे पहला टास्क है आई हैव टू शूट अ वीडियो. सो आई एम प्लानिंग टू फिल्म द शीन हॉल. इससे पहले आई टू फिल्म दिस ब्रांड कोलैबोरेशन बट उसमें कुछ इशू आ रहा है तो मैंने सोचा मैं इसको ही फिल्म कर लूँ, वरना मैं इसको ट्रिप से आने के बाद फिल्म करने वाली थी. बट एनी हाउ मुझे कोई भी अपलोड मिस नहीं करना. सो आई एम गोना फिल्म दिस टुडे एंड आई एम गोना शो यू गाइज लाइक माई सेटअप एंड हाउ आई फिल्म एंड एवरीथिंग. वेयरिंग दिस रियली क्यूट पुलोवर फ्रॉम शीन. आपने इसको हॉल में पहले ही देख लिया होगा. एंड आई हैव लेड डाउन ऑल द आइटम्स दैट आई एम गोना शो इन द हॉल. एंड दिस इज माई सेटअप, लाइक दिस इज माई रिंग लाइट. उसके ऊपर मेरा कैमरा है. आई यूज Canon 1300D. काफ़ी ओकेश कैमरा है फिल्म करने के लिए, बट मैं उसको स्टार्टिंग से यूज़ कर रही हूँ. सो इट्स डिसेंट एंड दिस इज़ वेयर आई सिट. Guys, it's Yashita and welcome back to my channel. So for today's video I decided to do a Shein winter haul.
हाय गाइस, सो आई टोटली फॉरगॉट दैट आई वाज व्लॉगिंग. फिल्म करने के बाद मैं उसको एडिट करने के लिए बैठ गई. देन आई हैड माई लंच एंड अब शाम हो गई है एंड वी आर अबाउट टू हिट 100K एंड आई कांट बिलीव दिस. आई मीन what is happening? Okay, so as you can see currently we are at 99,971 subscribers, so we just need 29 more. Okay, so my brain cannot handle this. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है यार कि 100K होने वाला है मेरे यूट्यूब पे. इट फील्स सो अनरियल. आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन यू गाइज. मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि मुझे कैसा लग रहा है इस वक्त. दिस ईयर आई लिटरली हैड ज़ीरो होप्स कि मतलब मेरे 25K भी हो जाएंगे. एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर विद माई लैपटॉप वेटिंग फॉर 100K. My brain cannot process this. I can't. I don't want to cry, but अभी तक मुझे पता था कि हाँ 100K होने वाले हैं एंड मुझे हिट नहीं हो रही थी बात, मतलब कभी कभार यकीन ही नहीं होता है ना. लाइक मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है एंड आई कांट एक्सप्लेन. मतलब सो आई एम जस्ट गोना वेट हियर. देखते हैं 100K कब होगा. Freaking thousand beautiful people and I still can't believe it यार. मतलब मुझे सच में यकीन ही नहीं हो रहा है. And I really want to take a moment to thank all of you, क्योंकि ये जो भी है सिर्फ आपकी वजह से है. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मतलब दिल से थैंक यू यार. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव, सो मच सपोर्ट. मतलब आई लव यू यार. एंड आई ऑल्सो वांट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक माई मॉम, क्योंकि यार बिहाइंड द कैमरा जो चलता है ना वो उनको पता है और मुझे पता है. शी इज़ द वन हु मोटिवेट्स मी एवरी डे टू कीप वर्किंग हार्ड. शी फॉर एवरीथिंग शी इज़ देयर विद मी. सो या आई रियली वांट टू थैंक हर. और आपको कैसा लग रहा है? तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने भी इसे इतना लाइक किया है और इतना सपोर्ट किया और इसके चैनल को सब्सक्राइब किया है. सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. Hi guys, so it's the next day. Today in the morning my friend came to visit me. She had got this little surprise for me. I'm gonna insert the clip right here. She got for me this really cute chocolate stuffed with my favorite candy. और उसके अंदर ऐसा बहुत क्यूट सा 100K लिखा था. So that was really fun, really cute. Then we chilled out for a bit. Then she left. So today is like the only day for me to prepare for the trip. 100K की एक्साइटमेंट में मेरा सारा ध्यान सिर्फ उसी पे था. ट्रिप के बारे में तो मतलब मैं भूल ही गई थी. अभी तक मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है ट्रिप के लिए. So yeah, today I have to get done with all of these things. Firstly, my plan is to do some skincare. Then I'm gonna proceed to do some packing. So as soon as my friend left, I immediately hopped into the shower. अभी दिल्ली में कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात भर, तो काफ़ी ठंड बढ़ गई है. So I took this long hot shower which was really relaxing, really soothing. So I'm gonna quickly take you guys through my shower routine and tell you guys what all I used. So the first thing that I used today was this teeth whitening activated charcoal powder. This one is from the Beauty Co. This is not sponsored guys. मैं आपको जो भी दिखाऊंगी वो मेरा पर्सनल पिक है. पर्सनल मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इसको. तो इनफैक्ट अभी नायका की जो ब्लैक फ्राइडे सेल हुई थी उसमें से मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगाए हैं कुछ. मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है. सो इसका रिजल्ट इज़ ओके. अभी तक ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नोटिस किया मैंने, बट आई वुड हैव टू यूज़ दिस अ कपल ऑफ मोर टाइम्स टू गिव यू गाइज लाइक अ फुल रिव्यू. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई यूज्ड इन द शावर इज दिस फेस वॉश. दिस इज बायोडर्मा सेबियम जेल फेस वॉश. दिस इज लाइक माई एवरीडे एसेंशियल प्रोडक्ट. अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो देन यू नो दैट आई लव दिस फेस वॉश. इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए
काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई यूज टुडे इज द शार जेल फ्रॉम नायका। सो दिस इज फ्रॉम देयर वंडरलस्ट कलेक्शन। जो मैंने गिव अवे किया था उसमें मैंने ये शार जेल इंक्लूड किया था, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सो आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ इज वेल। ये काफ़ी अच्छा शार जेल है। एंड टुडे आई डिड नॉट वॉश माई हेयर। मैं हमेशा शैम्पू करने से पहले 2 दिन या 3 दिन का गैप ज़रूर देती हूँ, तो मैंने परसों ही हेड वॉश किया था, तो आज मैंने हेड वॉश नहीं किया। आज मैं अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करूंगी, उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी एंड कल निकलने से पहले आई एम गोना वॉश माई हेयर। ओके, सो नाउ आई एम गोना यूज दिस बॉडी लोशन फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। दिस इज देयर मैट अबाउट यू। आई हैव ऑलरेडी यूज लाइक 1 बॉटल। एक बॉटल मैं इसकी यूज कर चुकी हूँ। दिस इज माई सेकेंड बॉटल। आई रियली लाइक दिस बॉडी लोशन। ओके, सो आई चेंज क्विकली। मुझे बहुत ठंड लग रही थी बाथ गाउन में, सो आई एम वेयरिंग दिस रियली क्यूट फ्लफी वार्म कोजी सा पजामा एंड आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट। सो नाउ आई एम गोना यूज दिस नोज स्ट्रिप। दिस इज फ्रॉम हिप हॉप। इट्स दैट चारकोल नोज स्ट्रिप। सो इससे काफ़ी अच्छे से वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। मैंने एक स्ट्रिप इसकी पहले भी यूज़ कर ली थी, सो आई रियली लाइक दिस। स्ट्रिप को अप्लाई करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक सम लूक वार्म वाटर और उसके अंदर कॉटन की ऐसे बड डिप करके जस्ट डैम्प योर नोज अच्छे से, ताकि जो स्ट्रिप है वो आपकी नोज पे अच्छे से स्टिक हो जाए। So now I'm gonna leave this strip for 10 minutes at least, ताकि सारे white heads और black heads अच्छे से निकल जाए। Okay, so now I'm gonna use this toner. So this is the green tea toner from its skin. मैं इसको अच्छे से इस कॉटन बड में लेके पूरे फेस और नेक पे लगा लूँगी। एंड ग्रीन टी इज समथिंग वेरी सूटेबल फॉर एक्ने प्रोन स्किन। एज यू कैन सी मुझे यहाँ पे थोड़े से पिंपल हो रहे हैं। ऐसा ज़रूर होता है कि जब मुझे कहीं ट्रिप पे जाना होता है या कुछ स्पेशल आने वाला होता है तो पिंपल तब ज़रूर होता है, मतलब ऐसे कभी नहीं होगा, बट जब भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा देन। Okay, so next I'm using this sheet mask. So this is the charcoal sheet mask from Mirabelle. ये मुझे personally मेरा favorite sheet mask है। Charcoal sheet mask is something again very good for oily and acne prone skin. And अभी जैसे मुझे pimple हो रहे हैं, I think ये काफ़ी help करने वाला है। So I'm gonna apply the sheet mask and I'm gonna leave this for good 15 to 20 minutes, ताकि ये मेरे skin पे इसका जो सीरम है बहुत अच्छे से absorb हो जाए और काफ़ी एक glowing effect आए। सो जब तक मेरे फेस पे शीट मास्क है, आई एम गोना क्विकली टेक आउट माई सूटकेस एंड स्टार्ट पिकिंग अप आउटफिट्स दैट आई वांट टू टेक ऑन द ट्रिप विद मी। सो आई हैव टेकन आउट द शीट मास्क और जितना भी रेसिड्यू सीरम स्किन पे होता है ना, आई लेट इट एब्जॉर्ब। अभी मैं इसके ऊपर कोई भी क्रीम वगैरह नहीं लगाऊंगी। एंड आई डोंट नो, आई कैन इंस्टेंटली सी लाइक दिस ग्लो, दैट्स व्हाई आई रियली लाइक द शीट मास्क। एंड इन द मीनवाइल जब तक मेरे फेस पे शीट मास्क लगा था, मैंने रफली एक पैकिंग कर ली है। आई एम गोना पैक लाइक माई कैरी ऑन बैग। सो आई एम टेकिंग दिस बैग। दिस इज लाइक अ परफेक्ट साइज बैग। ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था। इसके यहाँ पे एक फ्रंट पॉकेट भी है, तो यहाँ पे एसेंशियल वॉलेट वगैरह मैं रख सकती हूँ। एंड देन इट हैज़ लाइक अ बिग कंपार्टमेंट और इसमें मेरी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। सो आई एम गोना क्विकली शो यू कि मैं इसके अंदर क्या क्या रखने वाली हूँ। ओके, सो इन द फ्रंट सेक्शन ऑफ माई कैरी ऑन बैग आई विल कीप माई वॉलेट। इसमें सारी आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको अपने फ्रंट जिपर में ही रखती हूँ। मूविंग ऑन, व्हाइल ट्रैवलिंग आई रियली लाइक टू रीड बुक्स, सो दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग दिस बुक। स्पेशली फ्लाइट के टाइम आई रियली लव टू रीड, सो आई एम गोना कीप दिस बुक इनसाइड। Okay, so the next thing that I'm carrying is this notebook and this pen. Inside this notebook मैं हर चीज़ plan out करती हूँ and I really like to take this everywhere with me. Next I'm gonna carry these 2 scrunchies. While traveling I really like to keep like extra pair of scrunchies. Next I'm also taking my Polaroid camera with me. ये इस pink case के अंदर है. So I'm gonna keep this on my carry-on bag. Then I'm gonna put this makeup pouch inside. Then I'm gonna keep my travel skincare kit. So next in this pouch I'm gonna keep my earphones along with my phone charger, so I know कि ये कहाँ पे रखा है and I can access them easily every time. So lastly I'm also putting these makeup removal wipes. So these are all the things that I'm taking in my carry-on bag. Now packing is almost done. I'm just left with one more thing, that is putting on some fake nails.
done. They look super cute. It hardly took me like 25 minutes to do both my hands and I really love it. And before I end this video, if you liked watching this video, make sure to give it a thumbs up. पता नहीं आपको ये vlog कैसा लगा होगा, बहुत random सा था, बहुत chilled out सा था, but yeah, I wanted to share this with you. And if you don't follow me on my Instagram already, you should, क्योंकि अंडमान ट्रिप के सारे स्टोरीज मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी. एंड अंडमान की ट्रिप से वापस आने के बाद आई एम गोना अपलोड द अंडमान व्लॉग एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू फिल्म दिस वेकेशन लुक बुक. ऑल्सो आई एम गोना फिल्म लाइक अ टेस्टिंग आउट 5 minute crafts फूड हैक्स, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास. सो आई एम गोना डू ऑल ऑफ दैट वंस आई एम बैक फ्रॉम द ट्रिप. एंड या इन द कॉमेंट सेक्शन मुझे ट्रिप के लिए बेस्ट ऑफ जर्नी बोलो एंड ऑल्सो लेट मी नो विच वॉज योर फेवरेट पार्ट इन दिस व्लॉग. एंड या आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. Bye.